Oh, you really going to have to find it. Oh, you really going to have to find it. Oh, you really going to have to find it. बड़ा ही घटिया आवाज आ रहा है। हेलो हेलो, आप सही हो? ठीक हो ना? आवाज, अरे यार, पता नहीं क्यों, क्या करूँ? हेलो हेलो, आवाज ठीक आ रही? प्लीज अभी कोई आता है, अभी कोई आता है। हेलो हेलो वन टू वन, अभी कोई आता है। हेलो हेलो वन टू वन, मुझे बस सुननी है मेरी आवाज। ये बात गगन के दीवार, ये प्यार लगे आते हैं, मैं कब तक साथ चलूं, जब तक लगता है कि मैं इसको लेना किसी को क्या है, इस बात को नहीं चलो। अबे विंडो कैप्चर नहीं चल रहा है, थोड़ा सा गलत हो जाता है। लिंक है, आंसर डिलीट, अपना फिल्टर का है इसके लिए, डिस्प्ले का इसको विंडो कैप्चर के अंदर मुझे क्या लेना चाहिए? ये तो फिर इसका विंडो कैप्चर हो गया ना, क्या हो गया? बाहर है लेके थोड़ी सी। ओके, Nice work, Hugh. भाई ये दिखाई नहीं दे रहा है गेम के अंदर, डिस्प्ले कैप्चर में आता भाई। डिस्प्ले कैप्चर में तो कुछ होने वाला है। Oh, yeah, that thing. Ah, the ball's rolling away. ये तो दिखाई सकता है ना।
मेरे को समझा दे भाई, क्या चल रही है। तुम लोग से ड्यूटी कर देते थे, डिस्प्ले का चक्कर में सब कुछ हो रहा था, क्या करें अभी। अरे भाई ये क्या चल रहा है, मैं समझ रहा था। वीडियो फॉलो फॉलो करके। हाँ उसने स्क्रीनशॉट तो दिखाया, बस स्क्रीनशॉट दिखाया उसने। उसको बोले लाइव वाइस क्लियर नहीं है। जानते हो वाइस क्लियर नहीं है यार, ये ना मतलब मिलाते अभी। ओबीएस मेरा पूरा खराब हो गया। ओबीएस मेरा पूरा का पूरा खराब हो गया। जानते हो वाइस बहुत खींची जा रही है। क्यों शॉट नहीं वीडियो। हेलो हेलो, क्या कर रहा है, आवाज आ रही है। हेलो 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 हेलो, आवाज तो है। हेलो हेलो हेलो। वाइस ऐसी आ रही है कि और सुनने का मन ही नहीं कर रहा। हटाओ फिर इस गेम को। अपन आवाज को थोड़ा सा फोकस करेंगे इस पे। ये सब चीज़। स्टूडियो वाइस की ड्यूटी। वाइस फिल्टर वॉइस फिल्टर। show you how you can go ahead and improve the ahead and get adjusted here. So now for color range, I like to go ahead and do उसको ऑडियो फिल्टर्स वगैरह सब ज्ञान लेके आए हैं, सब कुछ ऐड भी कर देते हैं, बट वो हिसिंग साउंड को रिमूव नहीं कर पाते हैं। जब वो चुप रहते हैं तो एकदम साइलेंट रहता है उनका माइक, बट वो जैसे ही कुछ शब्द निकालते हैं अपने मुंह से, उनके शब्द के साथ साथ हिसिंग साउंड भी जाता है। तो वो सारी चीजें आपके साथ नहीं होगी, एकदम आसान तरीके से आपको मैं बताऊंगा। और हाँ, मैटर नहीं करता आप ऐसा माइक यूज करते हो या फिर आप अपने हेडफोन का माइक यूज करते हो, आप कैसा ओके। भी माइक यूज करते हो, बस ये सारी सेटिंग्स को देखो और मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। आप अपने ही माइक को एकदम पीरो माइक। तो सबसे पहले हम लोग ये सारी सेटिंग्स को रिमूव करेंगे, बट उससे भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आप यहाँ पे आपको ये जो माइक से क्या हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे सेटिंग है, इतना सेटिंग ऑडियो बनाने के लिए। बट ये सारी सेटिंग्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको सुनाता हूँ कि नॉर्मली कैसी आवाज आती है। तो मैं इसको हटा दूंगा, डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, यार कितने मतलब लिंक कर दे रहा है भाई ये। इसको भी डिलीट, सब सेटिंग्स मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो कैसी आवाज आ रही है, अभी मेरे माइक से ही आवाज आ रही है, समझ लो कोई फिल्टर जो है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं किया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वन बाय वन फिल्टर्स ऐड करेंगे और उनकी सेटिंग्स भी मैं आपको बताऊँ। प्लस कर लोगे तो सप्रेशन में आपको, अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो आपको ये आर एन नॉइस वाला मिल जाएगा, शायद से एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स वगैरह पे आता है, या जो भी है। अगर ये नहीं भी है तो आपको ये मिलेगा डिफॉल्ट ऑप्शन, और मैं आपको रिकमेंड भी यही करूंगा कि डिफॉल्ट वाला ऑप्शन ही यूज करो। आर एन नॉइस पे आप लोग सुन सकते हो, आर एन नॉइस पे ज्यादा हिस साउंड आ रहा है, देखो, है ना, हिसिंग साउंड ज्यादा आ रहा है, तो मैं हाँ ये वाला यूज कर लूंगा, ये ज्यादा क्लीन लग रहा है। आपको इसको कम ज्यादा करके देखना है, आपको हिसिंग साउंड आपकी कहाँ कम से कम आ रही है और आपकी ऑडियो भी प्रॉपर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे -30 जो डिफॉल्ट है मेरे लिए प्रॉपर काम करता है, मैं वहीं रहने दूंगा।
आपको इतना नोटिस करना है कि आपकी आवाज प्रॉपरली आ रही है। थोड़ा बहुत हिसिंग साउंड रहेगा तो भी हम उसको आगे सॉर्ट कर लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नॉइज सप्रेशन को -30 पे रहने दूंगा। सेकंड फिल्टर यहाँ पे हम लोग प्लस पे ऐड करेंगे और कंप्रेसर ऐड करेंगे। कंप्रेसर ऐड करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को गेन को एडजस्ट करना है। अभी मेरी आवाज थोड़ी कम जा रही है तो मैं अपने गेन को बढ़ाऊंगा यहाँ से। मेरा तो क्लियर गेन हो को तो बना। मैं 8 के आसपास करूंगा तो मेरी ऑडियो देखो प्रॉपर हो गई, थोड़ी बढ़ गई मेरी ऑडियो। तो यहाँ हाँ पे 8.20 में रहने देता हूँ अपने आउटपुट गेन को। बाकी चीज ओके को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग गेन को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है तो आप गेन को कम करो, और बहुत कम आ रही है तो गेन को बढ़ाओ। तो मतलब आप धीरे भी बोलोगे तो यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो कि आपकी आवाज जो है वो येलो रीजन में आ रही है। अभी मैं धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। तेज बोलूंगा तो यहाँ पे रेड में जा रहा है। इसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब अगर आपने लाइव स्ट्रीम पे आपने जोर से चिल्ला दिया और आपके दर्शकों के कान ना फटे, उसके लिए क्या सेटिंग करना है वो भी मैं बताता हूँ। कंप्रेसर सेटिंग आप लोग यहाँ पे कर लो, मेरे लिए 8.28 के आसपास सही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और ऐड करूंगा प्लस पे, और यहाँ पे अब हम लोग ऐड करेंगे लिमिटर। लिमिटर ऐड करने से क्या होगा कि हम लोग अगर चिल्लाएंगे तो भी हमारे लाइव स्ट्रीम पे बहुत हाँ ज्यादा जोर से आवाज नहीं जाएगी। तो अभी मैं जोर से बात कर रहा हूँ तो रेड पे जा रहा है, तो ये मेरे को नहीं जाना चाहिए, इसको मैं कम करूंगा यहाँ से। तो -10 किया मैंने। 50 है, 50 है, 50 है, तो इम्प्लीमेंट भी करेंगे, करेंगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अभी मेरी आवाज डबल डबल हो रही अब मैं जोर से बात कर रहा हूँ तो रेड एरिया में नहीं जा रहा है, तो इसको -10 के आसपास कर दिया मैंने। तो मैं जोर से है। बोल रहा हूँ ओके तो रेड एरिया में यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही आपको एडजस्ट करना है अपने लिमिटर को, ओके जोर से बात करते हुए। जोर से बात करके देखो, जोर रेड से बात एरिया में करो। नहीं जाना चाहिए। रेड ओके एरिया में जा रहा है मतलब आपके व्यूअर ओके का कान फट रहा है, ठीक है। तो हट यहाँ रहा पे है। लिमिटर को भी हमने प्रॉपरली एडजस्ट कर दिया। अब किसके यहाँ कान पे फट मैं रहा फिर है? से प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अब आप लोगों को लगाना है नॉइज गेट। नॉइज गेट क्यों लगाना है देखो मैं बताता हूँ। ओके अभी अगर मैं चुप हो जाता हूँ ओके तो भी ये नॉइस नीचे गेट वाला जो ग्रीन बार है माइक वाला, वो हिलते रहता है, मतलब मेरे बैकग्राउंड की नॉइज जो है वो जाते रहेगी। अगर हाँ आपका एरिया मेरे से भी ज्यादा आवाज करने वाला एरिया है तो फिर आपका ये ज्यादा हिलेगा, मतलब बैकग्राउंड नॉइज जो है वो आपके लाइफ। तो यहाँ पे नॉइज गेट को हम लोग अप्लाई जैसे ही कर देंगे, यहाँ पे नॉइज गेट को, तो डिफॉल्ट सेटिंग पे भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे वो ग्रीन वाला जो माइक है वो यार काम नहीं कर रहा है, मतलब मेरी बैकग्राउंड ऑडियो, मेरे माइक से कोई ऑडियो मेरे लाइव स्ट्रीम पे नहीं जा रही है जब मैं चुप हूँ, सही है। ठीक। अगर नॉइज गेट ऐड करने के बाद भी ये हिल रहा है तो यहाँ पे आपको ओपन थ्रेशोल्ड और ओके क्लोज थ्रेशोल्ड को एडजस्ट करना है। देखो ओपन थ्रेशोल्ड वो है कि आप अगर धीरे बोलोगे तो आपका माइक ओपन नहीं होगा, अगर आप तेज बोलोगे तो आपका माइक ओपन होगा। तो यहाँ पे मैं आपको हेलो दिखाता हूँ, मैं ओपन थ्रेशोल्ड को अगर थोड़ा सा बढ़ा दूं तो देखो मैं धीरे बोल रहा था तो मेरा माइक ओपन ही नहीं हुआ, हेलो मैंने जैसे तेज बोला तब मेरा माइक ओपन हुआ। हेलो तो इसको आपको एडजस्ट हेलो करना है। तो यहाँ पे हेलो -26 रहने देता हूँ मैं, और यहाँ पे थोड़ा -35 कर देता हूँ। क्लोज थ्रेशोल्ड वो है कि जब भी वो -35 dB के नीचे ऑडियो की फ्रिक्वेंसी जाएगी तो मेरा माइक अपने आप क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑडियो गेट या मतलब नॉइज गेट जो है वो हेलो ऐड कर देना है। अब इतनी ही चीजें ऐड करने के बाद मुझे तो मेरी ऑडियो एकदम परफेक्ट लग रही है, मतलब एकदम ओके हाई लेवल की ऑडियो। इक्विलाइजर वगैरह मैंने नहीं बताया आपको, एकदम सिंपल सेटिंग बताई है, बट काफ़ी है, इतनी ऑडियो काफ़ी है। आप लोग सुन सकते हो ऑडियो अब कैसी हो चुकी है। तो ये बस इतनी ही 4 सेटिंग आप लोग अपने लाइव स्ट्रीम पे अपने ऑडियो फिल्टर में ओबीएस स्टूडियो में ऐड। हाँ तो अभी ऑडियो ऑडियो देखिए अभी फटी हुई अभी फटी हुई बांस जैसी आवाज आ रही है। अभी कुछ चेंजेस करना बाकी है। अरे आवाज मेरी आवाज मैडम क्या कह रहे हैं? अरे यार आवाज आवाज अपनी आवाज आवाज की पीछे करो लग उसको। गई। recommend keeping the shape the way that I have it. The next filter we're going to पूरी आवाज पतली। हेलो सारी
ऐसे देखो स्क्रीन आया था। हेलो 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 हेलो। पहले अपना सही था। कंप्रेसर। हेलो। ठीक है ना? पहले अच्छा कीजिए। पहले अच्छा कीजिए। ओके अब देख। ओके अब 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 हेलो हेलो। देख देख। हेलो देख। आपसे नहीं। खरखर। हेलो। क्या करूं? ज्यादा शॉर्ट हो रहा है। एयरफोन लगा के। ओके अब 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 हेलो। हाँ ये थोड़ा सा ना। अब मैंने इसका अंदर सॉरी थोड़ा सा सेल कर ले। हाँ अब तो मेरे भी काम करे। अब वो थोड़ा पीछे वाला है। अब हमें कंप्रेसर गेम। हाँ अब ठीक है। अब अर्निंग बहुत कम है। मैंने अभी वो कम किया ना। ओके नाइस नाइस गेम। हेलो हेलो हेलो। सही है ना? सही है। नहीं नहीं वो तो भाई। ओके अब अब वो ज्यादा गेम। अब तुम सॉरी। हाँ अब करो आप। अब हाँ, अब अब हेलो। अब देख। अब कटे पेड़ पे कटा पपीता कटा पेड़ पे कटा पपीता। हाँ नहीं सॉरी। इसको आता ये फिल्टर था। ओके ओके ओके। हाँ अब देख थोड़ा सा फर्क पड़ा है किसी चीज में। देख इसको। ओके अरे यार, फिर पुरानी कटिंग अच्छी अच्छी थी।
हेलो सॉरी आवाज It has never been easier to capture your game audio, microphone, Discord, Spotify, all on separate tracks inside of OBS Studio on a Mac. That's why in this video, I'm gonna be showing you guys 2 different ways you can accomplish this to get complete control of your audio. So jumping right in, method 1 is gonna be utilizing OBS Studio's native feature, OB Capture. Have any course. I'll name it Elgato Audio, select capture card, which is through as a part of our audio mixer to be captured. In case you guys need to hear your game audio coming through the Mac, you guys can enable the monitoring option by selecting this headphones icon at the bottom, and then you'll be able to hear it while recording game on your Mac. It'll work with that as well. We can go mix these sources right now, related or together. Moving on to method 2, or application you're hearing through, but you guys will also be able to add any other microphones that are connected to your computer. As an OBS Studio beginner, I understand how frustrating it can be that you select that. I don't have any additional microphone scenes that I add. Quickly, phone, that's pretty good. Before we mess with, be able to add these OBS filters that are built right within the software. Newer, modern PC, this really doesn't take up much resources at all, and it does a really good job at getting rid of any remaining droning or fan sounds in your background. The next audio source we're gonna add is the noise gate. Select that, select OK. The purpose of this filter is to mute your microphone audio if it drops below a certain decibel level. This is great for when you stop talking, so background noises or droning sounds okay so select for 20 won't come through the microphone 26 when you're not speaking. Now the numbers that they give you here are a great starting point, but since I've already tested this out with this cheaper microphone, I found that the best numbers for me are -43 for the close threshold and then open threshold 38. And the reason why I pushed these down is because at the higher points that were set by default, I experienced some clipping in the audio due to the fact that a louder volume of sound needed to come through in order to open up this gate. So if you're experiencing audio that doesn't sound quite right when you start talking or in talking, tweak these two below. Add is the 3-band equalizer. Go ahead and select OK. And the purpose of this filter is to adjust the tone, shape, and character of your voice. So if you want to get that more radio or high quality podcasting sound, this is where you can make that magic happen. Now the hello 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 settings that I typically like to set this at is having the high frequency at about 2. The mid frequency, I keep that as is. And then I put the low frequency also at around 2. You can feel free to play around with this, but I would recommend keeping the shape the way that I have it. The next filter we're gonna wanna add here is the compressor. The purpose of this filter is to reduce the microphone audio level if you are screaming into the microphone to prevent it from okay you gonna hello okay okay it's fine okay why it's fast out of it 0 okay peaking or clipping, but at the same time, boost the audio if you are talking very quietly into the microphone so that it can still be heard. So let's start here by looking at the threshold. This is how much we want the audio to be reduced once it hits that maximum point. You can comfortably set this anywhere between -15 and -20 decibel levels. I liked -18, so we're just gonna keep that. Looking at the ratio is how much we want that audio to be minimized or compressed once it does hit this threshold. 10 is definitely too high. It should really be hello hello
हेलो, ठीक है ना? आवाज अभी क्लियर? Between 3 to 4. I'm gonna go with 3 here for my ratio. The output gain down here boosts the level of the audio after the compression has been applied. So anywhere between 3 and 6 is pretty good. I'm gonna go with about 4. And then attack and release, we'll keep that as default. One more filter we wanna add to the microphone. हेलो, ठीक है, अब ठीक है थोड़ी सी। हाँ, So let's select the plus button, and this time we are gonna add a limiter. Select OK. The way that this filter works is literally in its name, as it limits the level of audio that is allowed to be hit. So Okay. whatever you set here, ठीक है, once it hits that point, any audio that tries to go above it is going to be automatically brought Okay. down. So anywhere between ओके, सही तो है, मतलब क्या ही है? ओके, हाँ, ठीक है। -3 to -6 is a good range. हेलो, अच्छी बात, अच्छी बात। हेलो, 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 मेरे यहाँ कान पे ओके, बहुत ही कटी हुई
आवाज आ रही, बहुत ज्यादा, क्या करूँ? अच्छा, ठीक है। नाइस, 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 नाइस। ओके, अब सही, आवाज, सबसे पहले लैंड करेंगे गेम, इनको सबको हटा दो, गेम वर्ड में। हेलो, बेटा, आवाज, अब आएगा, मन सब कुछ, सबके सामने, फिर, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, 13 अब आएगा कंप्रेशन, थोड़ा सा बड़ा देंगे, समझे? प्रेशर को बड़ा देंगे, थोड़ा सा, क्या दे, ओके, सेक्शन सर्विस, एक्सप्रेशन, थोड़ा सा बड़ा, इसमें कंप्रेशन, वन, कंप्रेशन, आवाज, कंप्रेस, लिमिटर, ओके, आवाज, लिमिटर, लिमिटर, बाकी, नॉइस, ये कम कर दो, ओके, आवाज, क्लिस्टर क्लियर, ओके, सर, पहले वाला फिक्स करना था, चंदू की चाची को चार में चौक में चार में रात को चांदी की चम्मच चटनी चटाई, ओके, तो चंदू की चाची ने चंदू की चाची को चार में चौक में चार में रात को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, चंदू की चाची ने चंदू की चाची को चार में चौक में चार में रात को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ओके, तो चंदू की चाची ने चंदू की चाची को चार में चौक में, बहुत ही घटिया आवाज है, बहुत ही ज्यादा घटिया, हेलो, 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 अब ठीक है ना? सही है, अटैक तो जीरो, शुरू बढ़ा, शुरू बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो, ये बेटा, थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा दो, एक काम करते, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते, मैं जो थोड़ा सा कोई थ्रेशोल्ड बढ़ा दो, थोड़ा सा, क्या? ओके, डन,
Let's say the word. चंदू के चाचा में चंदू की चाची के चार में चौक में चार में रात के चांदी की चौमट करने सकूं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची के चार में चौक में चार में रात के चांदी की चौमट करने सकूं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चार में चौक में चार में रात के चांदी की चौमट चटनी चटा दी बढ़िया तालियां बढ़िया तरीके में चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चार में चौक में चार में रात के चांदी की चौमट करने सकूं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चार में चौक में चार में रात के चांदी की चौमट करने सकूं चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चार्ली चौक में सामने रास्ते चार्ली की चौक में चटनी चटा दी हेलो बढ़िया तालियां बढ़िया तरीके में क्या है हेलो आप सब ठीक है भाई ऑपरेशन क्या कर रहे हो यार वीडियो चेक करते ही अभी पता नहीं कैंसर अभी भी पता नहीं कैंसर कर यार यार हेलो 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 आप सी हो ओके हमें शायद कुछ इसे इससे लगाना था ओके आई थिंक आई थिंक आई थिंक ओके ओके ठीक है ना तो जाहिर बोला दवाई थोड़ा सा आएगा ओके सही है चंदू के चाची चाचा ने चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चार में चौक मतलब अपनी रात के फैमिली को चम्मच से पत्नी चटाई चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चार में चौक में चार में रात के फैमिली को चम्मच से पत्नी चटाई बच्चे कुछ बजाओ तालियां मारो या फिर कुछ भी करो मुझे नहीं पता चंदू के चाची चाचा ने चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चार में चौक मतलब अपनी रात के फैमिली को चम्मच से Range for this and possibly a little bit more depending on how you've set the gain of your microphone up on the hardware itself. But for this microphone, I'm just going to keep it at minus बेस्ट ओबीएस माइक सेटिंग हीरो हिटिंग If you're a content creator who wants to get professional sounding audio like this, here's all the filters you should add in OBS. So in OBS, you want to find your microphone, open the filter menus, and then add in a noise gate, noise suppression, compressor, EQ, and a limiter in this specific order because each filter affects the next one in the chain. So starting with noise gate, these are my specific settings here, but नॉइज जीरो से ऊपर रखना है ये ट्राई कर लेते हैं
but you might have to change the close threshold depending on how loud or quiet your background sound is. Next up, we've got noise suppression, and this helps to remove any background sound when you're speaking. Personally, I'm using RN noise, but if you have an NVIDIA card, then you may have NVIDIA noise removal. Sometimes noise compressors will cut out when you laugh or scream, so you have to test out which one works best for your voice. That brings us onto the audio compressor, which balances out the difference between your loud and quiet sound. So what I would suggest is a ratio of 4:1, a threshold and -20, attack at 2 milliseconds, release at 150, and finally you want to change your output so that you're hitting around -10 to -5 on your audio meters. So for me, that's going to be around 5 decibels. Then we've got a 3-band equalizer, which helps to improve certain frequencies in your voice. So what I do is keep it simple and have a highs at +2, your mids at a -1.5, and lows, or the bass frequencies, increase by by 3. And then finally, you want to add in a limiter just so your audio doesn't get too loud, so have your release at 150 and your threshold at -5. If you're a content creator who wants to get professional sounding audio like this, here's all the filters you should add in OBS. So in OBS, you want to find your microphone, open the filter menus, and then add in a noise gate, noise suppression, compressor, EQ, and a limiter. अब देखो आवाज हाँ तो फिर ऐसा क्या क्या चल रहा है उसमें क्या चल रहा है ठीक है ना ठीक है हाँ कुछ नहीं करता ऐसे तो काम के पर्दे पड़ जाए क्या करूँ मैं आवाज तो ऐसे नहीं आ
मिल गया मुझे। मेरा पता मुझे मिल गया जहाँ से मैंने शुरू किया था। Price. I've used this mic before in a console streaming setup and I was really impressed with of this video, which is design package. It's way to the right side of the mic. You will not believe how many people get this wrong. Some mics record from the front, other mics record like this in this direction. An example is the Razer Siren Mini. So once you know you're talking to the right side, for me it's like completely into the front, but I'm turning it a bit because I want to speak over the microphone, because if you speak into the mic and make like a sound, you will hear that plosive. And when I turn it a bit and I talk over the mic, so like it's recording like this but I'm speaking like this, in that case when I do p, you will not have that plosive. And so then after that we complete to sounds, place where you need to change the volume. Before, like you need to do is right clicking your audio icon here, going to sounds, then to recording, then you double click your microphone, you go to levels, and then this is the first place where you need to change the volume before adding or removing gain and stuff in OBS with filters. So I did set the mic to 50% gain here. If I just move it to 100, you will see in OBS that I'm going into the red and it's kind of distorting. And so I'd say move it to the left and then just talk like you would on stream, and then gradually move it to the right until the volume is like at the end of the yellow, maybe a bit before that, and that's the perfect starting point for all the filters we're going to add. If I shout now, hey, it's going to peak, and if I talk really quiet, it's going to be a bit too quiet. So this is the perfect starting point. We can now go to the filters because this is really exciting. All of these filters will make this mic sound amazing, and the first filter you can add is a gain filter. And so there will be people that did set their microphone to 100% and that are still not at the end of the yellow here. In that case, you can add a gain filter here in OBS
OBS, and then you can just add gain right here artificially. However, it's better to do it in the audio settings. Now for everyone, the order of all these filters is extremely important, and the first thing you need to add is noise suppression. A lot of people first add all the effects and then noise suppression, but what you're doing then is amplifying all the noise that's within the audio and then afterwards trying to remove it. However, you should remove the noise first and then use the clean voice audio to add all the effects. You click on OK, and there are a bunch of options. That is, if you have an NVIDIA graphics card. If you don't, you will need to use one of these two options. All of these work the same. You click on it and then you just choose the suppression level. The harder you suppress the noise, the more it will affect your voice. You should play around with which one sounds better. ओके सेपरेशन ठीक है हाँ ये वाला ठीक है हाँ ये वाला ठीक है ये वाला ठीक है ये वाला ठीक है which one is better okay which one is better okay to you, or an end noise has no options. And then if you have an NVIDIA graphics card, the noise removal is absolutely amazing and it will barely affect your voice quality. Now to be fair, this noise removal is absolutely perfect for normal stuff. Now if my editor boosts my volume a bit, you will hear the noise and then you will hear how good this is. As you can see, it completely removes background noise, so that's perfect. The reason you would want to use NVIDIA noise removal is that this removes everything from the background, even people talking, a truck driving by. It's absolutely crazy, but this one is great as well. By the way, real quick, if you're not hearing your own microphone, I completely forgot, you can just go to the audio mixer, press one of these icons, go to advanced audio properties, and then next to your microphone source, you just want to change it to monitor and output, and then you will yes sir